Good morning everyone. This is Pawan Kumar again with a new session. In today's session we will study about average power again. Average power means we studied about average power in the resistive circuit. So we will be studying today power in inductive circuit, or you can say not only power, average power we will study in the inductive circuit. Before that, let me remind you that we studied average power in resistive circuit like I said. So in case of resistive circuit, we were getting average power equal to 1 upon 2 Im square R, where you have seen this Im was equals to the maximum current and the R is the resistance of the resistor connected in the circuit. All these things we have seen in the previous circuit, but in inductive circuit the situation will be bit different. In inductive circuit you will see that average power will have a different relationship, right? Average power will have a different relationship. So what will be that relationship? Let us see here. So for that, first we will write about instantaneous power. We will write about instantaneous power. Instantaneous power is, what about instantaneous power we can write? Instantaneous power will be equals to V into I, and here we will substitute the value of instantaneous voltage as well as instantaneous current. Current we have seen in the inductive circuit, it was not only sin omega t not carrying sin omega t only, it was carrying sin omega t minus pi by 2, due to which we said, after looking which only we said that current will be lagging behind voltage in the inductive circuit. So what we can do here, we can write like this: Vm Im together I have written, and then sin omega t. This sin omega t has come here. Now if I take common minus sign outside, then it becomes minus sin pi by 2 minus omega t. You will get this. Now sin 90 minus theta, you know it is equals to cos theta. Sin 90 minus theta is equals to cos theta. So the same we are going to apply here. This minus sign I will write here at the starting. After that sin omega t, and sin 90 minus theta, it becomes cos theta. So you have here sin omega t cos omega t with minus Vm Im. After this we can convert this form into a more appropriate form. How we can do that? This sin omega t cos omega t we will multiply by 2, and also we will divide it by 2. Multiply by 2 and divide by 2. Minus Vm Im upon 2 2 sin omega t cos omega t, it becomes 2 sin theta, right? 2 sin theta, not 2 sin theta, it will be sin 2 theta, or you can say here sin 2 omega t. So what is the formula of instantaneous power you are getting here? Instantaneous power you are getting equal to minus Vm Im upon 2 sin 2 omega t, right? This is the formula of instantaneous power. But we do not have to calculate only instantaneous power. Average power also needed to be found. So what is average power? Average power is nothing special. We will find out just average of instantaneous power. Like you can see here, we got average of minus Vm Im upon 2 bracket sin 2 omega t. Average of whole of this we will calculate. Now you can see here this minus Vm Im upon 2 is not going to change, so its average will also come exactly same. Sin 2 omega t, average of sin 2 omega t we will be writing here. Average of sin 2 omega t, it gives you
what it gives you? It gives you 0. Now minus Vm Im upon 2 into 0, it gives you 0. That means we can say here that average power dissipated in inductive circuit, it will be equal to 0. You can also write it in the theoretical form, average power dissipated in the inductive circuit, or in more appropriate way you can write purely inductive circuit. Purely inductive circuit means, children, there will be only inductor, nothing else you will find in the circuit. Purely inductive circuit will be 0. So this is the advantage of using AC. Like you can say that whatever average power will be dissipated in the inductive circuit, it becomes 0, right? This is one of the advantage of using alternating current in the household circuit. Now let us do a numerical based on this scenario which we studied here. So the numerical is, let me insert that numerical. It is an example from your textbook. You will be able to see. Okay, yes, you can see here. This is the example. What is example? Let us read it. Example is a pure inductor of 25 millihenry. Inductor of 25 millihenry. That means this is the value of inductance. It is 25 millihenry. In SI unit it will be 25 into 10 to the power minus 3 Henry. Is connected to a source of 220 volt. मैंने आप लोगों को बताया था जब भी सर्किट में दिया जाएगा that will be RMS voltage. RMS voltage will be 220 volt और यही वोल्टेज हमारे यहाँ हाउस होल्ड सप्लाई में भी आया करता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है. Find the inductive reactance. We have to find out inductive reactance first of all. इंडक्टिव रिएक्टेंस ये हमको फाइंड करना है. एंड आरएमएस करंट इन द सर्किट. सेकंड थिंग, आरएमएस करंट, IRMS. द गोल्डन रूल ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल इज यू रीड न्यूमेरिकल और उसी के साथ साथ आप लोग क्या करते जाइए, जो जो गिवन चीज़ें हैं उसको लिखते चले जाइए. ओके. इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज, फ्रीक्वेंसी ऑल्सो इज गिवन, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज. तो बच्चों इस क्वेश्चन के हेल्प से देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ. यहाँ पर ये जो आपको दे रखा है कि 220 वोल्ट अप्लाई किए और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ये स्टैंडर्ड वोल्टेज सप्लाई रहा करती है हमारे इंडिया में. स्टैंडर्ड पावर सप्लाई कह दीजिए या वोल्टेज सप्लाई कह दीजिए, जो हाउस होल्ड सर्किट में रहा करती है वो यही होती है इन इंडिया. ठीक है, ये आप लोगों को चीज़ ध्यान रखनी है. एक नंबर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कैप्ड इन इंडिया फॉर हाउस होल्ड सर्किट्स. ओके, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है. अब देखिए न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले हमें एक्सेल फाइंड करना है. सो हाउ कैन वी फाइंड आउट एक्सेल? लुक हियर. एक्सेल वी नो इट इज़ इक्वल्स टू ओमेगा एल एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल. द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14. frequency is 50 and L, the value of L is 25 millihenry, that means 10 to the power minus 3. 50 into 200, 100 into this value 340 into 25 into 10 to the power minus 3. You multiply them and you will get your answer. Because it was reactance, so its unit will be ohm. Reactance कोई सा भी आए याद रखिएगा, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के अंदर उसकी जो यूनिट होगी ना वो कितनी होगी, वो ओम ही होगी. जो यूनिट रेसिस्टेंस की रहा करती है द सेम यूनिट विल बी ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑल्सो. ठीक है, आगे आप लोग क्या पढ़ोगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस पढ़ोगे, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की भी यही भी यूनिट होगी, चाहे आप कोई सा भी रिएक्टेंस पढ़िए. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट विच वी हैव डन हियर. Now let us do our second part. In the second part we have to find out RMS current, right? RMS current in the circuit.
So using Ohm's law, we can say if you want to find out current, you need voltage as well as you need resistance. But here we do not have resistance, here we have inductive reactance. RMS current we want to find out, so voltage will also be RMS. So let us put values of Vrms and XL. Vrms we have seen it was equal to 220, and XL whatever value you will get here. Okay, let us calculate the value of XL, then only we will move to our second part. Okay, so 314 into 25, right? 25 दिया 7500 और 25 चौक 100, 25 एकम 25, 10 35, इसको जोड़ दो बच्चों, 0 5 3 8 7, ये आंसर आना चाहिए। एक बार ना कंफर्म और कर लेंगे हम, ठीक है? मैंने शॉर्ट में किया है, थोड़ा फास्ट किया है, तो एक बार आंसर चेक कर लेंगे। गलती भी हो सकती है, ऐसा नहीं है गलती नहीं हो सकती। एक मिनट, ये थोड़ा पावर और है इसमें, तो ये पावर और छोटी 10⁻³ है ना, तो इसको एडजस्ट करके यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 7.85 आ रहा है आंसर। लेट अस चेक वंस कि आंसर क्या है। हाँ, यही है 7.850। देखिए ये आ रहा है ना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन सही हो गई है हम लोगों से, और इसको रफ कर देते हैं। सो नाउ वी आर इन अ सिचुएशन टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्सेल टू फाइंड आउट IRMS, ठीक है। न्यूमेरिकल्स बच्चों, जो जिन्हें डर लगता है ना, तो डरना मत, ठीक है? बहुत ईजी होते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल इज़ अ पार्ट ऑफ फिज़िक्स, आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। छोड़ दोगे तो सब फिज़िक्स ही आपको छोड़ देगी। अभी देखिए 220/7.85, ये आपको डिवीज़न अपने आप करना होगा, ठीक है? आप लोग अपने आप से करिएगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी IRMS। तो मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया कि किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ठीक है? और इस क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, एक्सेल फाइंड करना था और IRMS फाइंड करना था, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक? देखिए एक बार रिवीजन करते हैं जल्दी से। तो एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, सबसे पहले हमने पढ़ा है इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में। इंस्टेंटेनियस पावर हमने शुरुआत की थी P = VI से, और अल्टीमेटली आंसर आया था -VmIm/2 sin 2 omega t. This was our instantaneous power. After this we got average power. Average power we got equal to 0. Okay, this was first thing. This was second thing we found today. And after that, the third thing we did numerical. In the numerical we have seen the formula used were omega L is equals to XL, which is equals to 2 pi FL. And after that, the second thing was current. To find out IRMS, we will use Vrms, and in place of resistance, reactance will come. It will take its place. So these were the things we did today. The rest of the things we will do tomorrow in the next class. And after this, what will you have? Let us see here. Okay, so these all things. Okay, AC voltage applied to a capacitor. This will be our next topic, and this is a figure for the topic. In the figure you can see only capacitor is connected, so this we can say is a purely capacitive circuit, right? Like purely inductive circuit we had last, here we have purely capacitive circuit. So do not miss the next class. Till then, you keep revising. Take care.